So today I'm going to show you one interesting thing. I always start the topic with a problem statement. Then I tell you about that what is the solution, and solution is actually the topic. So I'm just going to create a class. I'm going to create a class. For that purpose, let me create some different packages also. So I'm going to create a package simply like package. I'm just giving the name one. Just giving a simple name. You can give any name. It is just for learning purpose. Otherwise, I told you that you should give the package name in a proper format, right? Two. So I'm just creating two different types. Now I'm going to create a class. Here I'm going to create a class, something like this, class, and I'm just going to create a class calculator. C-A-L-C-U-L-A-T-O-R. I'm going to create a class calculator, simply class. I'm not going to create a main method. Okay, I'm just designing a class. So anybody can tell me if I'm trying to create a class calculator. Okay, I'm trying to create a class calculator. So what properties or what function you can expect on this class? Are you getting my question? Whenever you are trying to create a class like calculator, so what things is coming in your mind? That just forget about the properties, especially about the functions. What functions do you think that should be available in this class? Addition, subtraction, division. Addition, multiplication. Exactly. So we all are agree on this, that at least we should have this function public. So I'm just creating void. Okay, I'm not returning anything. I will just display the things. Addition, and I'm just taking addition of two numbers. So I'm just taking the example of this one. Addition int a comma int b, and then I will make a calculation here like something int c equal to a plus b. Okay, so I'm designing a class. So I created this class, and I'm just going to create more functions like addition. Then I will say subtraction. So I will write a minus b. Then I will create a function like multiplication. Then I will say C. Logically, I will say A multiply B. Okay. Sometimes for developer forget to change the calculation within the function. They just copy paste, and that's why we are testers are here to find their bugs. And the last one is division. D-I-V-I-S-I-O-N. And I will say C-A divide. Is it okay? Yes. So Yes. actually in the starting starting two sessions, I told you about the class. That class is actually designed. So class is a collection of objects. That thing I've already told you. And also I told you about a concept that class is also a structure. Class is a blueprint. Yes or no? Class is a blueprint. And usually we create a class so that we can sell in the market. Yes or no? We create a class, we create some functions here, and we make this class available in the market, and anybody can create the object of this class. Yes or no? And call the functions. Yes or no? Yes. So I can show you that thing also. Somebody has you just created this class, and he has just made this class available in the market. So I'm just creating a package. Let me create package main something. So I'm just trying to create. It doesn't related to the topic. In the main, I'm just like a user. So you can take the example. Suppose Rabia is a user. Rabia want to use a calculator. So Rabia is a user. Now main function will be here because Rabia want to call the functions from the calculator class. So in Rabia, main function should be needed. Yes or no? Because where Rabia will call the functions. So in the calling class, main function should be there. So what we have to do it to call the functions from the calculator? Tell me. We'll create object. Yes, we are going to create an object of a calculator class. Calculator cal equal to new calculator. I have created the object, then I can cal dot, and I can call the function. Suppose I want to call the function. This one. Da, 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 da. I pass 4, I pass 2, and then I call it. I'm going to run it. Right click, run. Yes. Yeah. Oh, we have not making a SOP statement here. That's why it is not giving. So let me write a SOP, and here I will write some
and here I will write sum plus C, and that thing I will write in every function, so that at least we are not returning anything. Or we can write sum, and here I will write difference, diffference, and here I will write, what do you say, the partition? I think it is also known as product. I'm not sure. And this is called, let me write division, division, division. Okay, so this is a calculator class. It contains 4 function in the Rabia. I want to call it. I just simply call it. And are you getting my point? So it is running fine. Yes. Now here, one important thing is that this class is actually, you can say, available in the market. It is free to use. It is free to use. So when it is make available, Rabia, simply call it. Getting my point? Now, one more person comes into the market. You can take the example of Gulam also. Gulam decided, oh, somebody launch a calculator class in the market. And he has, you can say, just launched the class and everybody is using. I want to also launch a calculator class. But this time he want to launch a calculator, something like that. Scientific calculator. SCIENTIFIC. CALCULATOR. He is going to create a scientific CLCU. I have written later. Calculator. Yeah, that is good. So now Gulam want to create a scientific calculator class. Now tell me, here he will create functions which is related to the scientific calculator. But tell me, scientific calculator will not contain the function of general functions of the calculator, yes or no? आप मुझे बताओ, जब कोई कैलकुलेटर आप मार्केट में, यू हैव सीन अ नॉर्मल कैलकुलेटर, दैट इज गुड, ठीक है, उसमें एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरीथिंग इज देयर, बट समबडी इज गोइंग टू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा? होगा, yes or no? Yes. So now when the person who was designing the scientific calculator, he has one option. He has to first of all design all these functions, yes or no? Yes. So it means the person is going to design these functions here again in the scientific calculator, and then he has to add some more functions which is related to the scientific calculation. So I'm going to add 2 or 3 functions. Let me add only 2 functions. So I'm not going to write a logical thing for that, but you can take the example. Anybody can give me any, you can say, scientific calculator, any operation? Log. So log, you can say log. Okay, so here in case of log, you can take the input. I think it will take only one input. Yes or no? Yes. Okay, so here I don't know how you can calculate the log, but for the timing you understand that. So okay, I'm not going to write a code for that because I don't know. So I can simply assume that that this statement is actually presenting that you have calculated the log. So this statement you can assume just like a coding. Is it okay? Yes. Result, or you can say log calculator. So I'm just, because I'm not focusing on the part of calculation, I'm just focusing on the part that when you are going to design a calculator class, you have 4 functions. That is obvious. Now you are going to some other person. Okay, you can take the example that Pyle designed the calculator class. Pyle made this class available in the market. Everybody is using Pyle calculator class, and Pyle is very, very happy. Now Gulam decided, oh, I also want to be made famous. Maybe when he want to decide, he want to make this class available as a free, and if you want to earn some money, he will make this class available as a paid class. Yes or no? Both things are possible. So now in both the cases, he will do one thing. When he will design the class, he will actually include all the normal functions, and then he will add one log function, and one, you can take the example of, you can say, like for example, square. I'm taking the example SQUARE, square of a number. You can take it as a scientific calculator. I know that this is not a part of scientific calculator, but you can assume it. Okay, so here I will write a multiplied by a, and here you will say square. Are you getting my point? Yes. Now tell me one thing. It means here when Gulam designed this class, Gulam has done one thing.
all the functions which were actually available in any other class which was available in the market, but still he has to add or write same function, same 4 function again in his own class. Yes or no? Yes. And now you will see, just take the example Rabia. Now Rabia want to use some functions. So Rabia can do one thing. So Rabia want to use the, you can say functions from the scientific also and normal. So definitely she is going to call the scientific calculator. Yes or no? Yes. So scientific calculator equal to new scientific calculator. Now she has a good option that she can call the addition function as well as she can call the any scientific functions. Yes or no? Yes. Yes. Okay, so I'm showing this thing. Let me show you that part also. Sc dot square. And here I'm passing just like 2. So now it means now for the timing, let me you can say delete this code. So now you have seen that this code is running fine. Reason is that what happens? I'm calling this function addition. When you try to go to this class at runtime, what happened? Sc dot addition. Just click on control button and click. Where the control is going? In the Scientific. Scientific. yes, and when you are click on the square, it is going in the scientific calculator class. Yes or no? Yes. Yes. And it is very obvious thing, and indirectly in the reverse order you can also say that vice versa, that you are able to call these functions because these functions is square, addition, subtraction, everything is available in the scientific calculator. Yes or no? Yes. Is it okay? Point is clear? Yes. Yes. So now I will tell you one thing. Is there any option that scientific calculator class, when scientific calculator was class, the person don't need to write this code again here? Are you getting my point? The person don't need to write these functions again, which were already available in any other Calculator. class. Other class. So if I will make, now you will see, when I remove this function from here, you are start getting the error on the Rabia class on the functions which were removed. Yes or no? Yes. Yes. Are you getting my point? You are okay? That's simple. That is simple thing. In the scientific calculator, we have a functions like addition, subtraction, everything was there. We have a log and square. So we are able to call this function from the Rabia class. Rabia just like a user. Now, when I remove this function from here, like addition, subtraction, it is start giving error because these functions are not available in the scientific calculator. Is it okay? Yes. So now there is a concept that is called inheritance. Inheritance says that if some functions were available in any one class and you want to make these functions available in your any other class, you don't need to write these functions again. You can make a relationship of inheritance. And what is inheritance? Inheritance means kya hota in the real life, when something is some properties will have a parent, by default it is transferred to the child. Yes or no? Yes. रियल लाइफ में अगर पेरेंट के पास कोई चीज होती है, इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, इफ यू टॉक अबाउट द, यू कैन से रियल प्रॉपर्टी की बात करो, है ना, किसी के पास बंगलो होता है पेरेंट के पास, तो बाय डिफॉल्ट बच्चे को पता होता है कि बाद में तो आ ही जाएगा मेरे पास। और प्रॉपर्टी क्या होती है? वी नो दैट मोस्ट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, समटाइम्स कि हम जब को होता है, दैट इज द रूल ऑफ साइंस की डीएनए का मतलब क्या होता है, हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं ना, फिल्मों में तो बड़ा यूज करते हैं, है ना, कि जब मेले में खो जाते हैं तो कैरेक्टर से पहचानते हैं, अरे ये तो ऐसे बिहेव करते थे। So the both things are there. It is a rule of science as well as in the real life also. Law is also written in the way that if something is, you can say some parent have something that is already transferred to the child, or you can say child has a right to access those things. Yes or no? Yes or Yes. no? So Yes. here also in the Java, they have used a concept that scientific calculator want to use all the things from the calculator class, okay, without rewriting it. So उसने काम किया. Scientific calculator decided if anyhow I can declare that I am a child of calculator, so everything I can access. Yes or no? अगर scientific calculator किसी तरह ये proof कर दे कि मैं calculator का child हूँ, बच्चा हूँ, so everything will be available here. Yes or no? Yes. And how it is possible in Java? You have to write a syntax that is called scientific calculator means child class. There is a keyword that is called extends, and after that you have to write the name of the class which you want to treat as a parent. Now you will see when I will write this code, your error from the Rabia is gone or not. Just see here, calculator and just control S.
Error is gone from the Rabia. Yes or no? Yes. Yes. So it means one thing is already proved. This code is not giving error. It means this function is available in the scientific calculator. Yes or no? अगर Yes. ये लाइन एरर नहीं दे रही है और मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर रहा हूं, इसका मतलब ये फंक्शन कहां पे है? साइंटिफिक कैलकुलेटर में है. यस और नो? Yes. बट वी आर नॉट एबल टू सी इट हियर. हम उसे देख नहीं पा रहे हैं. इसका मतलब दे आर अवेलेबल बट इन द इनविजिबल फॉर्म. यस और नो? Yes. दिस वो इज अभी राबिया से कहाँ पे वो लेके जाएगा फिर? हाँ जी, राबिया से कोड लेके, देखो राबिया से कोड लेके यहाँ पे जब आप कर रहे हो, अगर आप कंट्रोल ओपन करेंगे तो हाँ हाँ जी, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू. जब आप राबिया से होके जाओगे तो होता क्या है कि जब आप राबिया से जाओगे तो आपको कैलकुलेटर के पास ले जा रहा है. रीजन इज दैट ये आपको दो, देयर आर टू थिंग्स. वन इज कॉल्ड कंपाइल टाइम बाइंडिंग एंड वन इज कॉल्ड रन टाइम बाइंडिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले जब आप ये करते हो तो ये सबसे पहले एक्चुअली जाता किसके पास है? साइंटिफिक कैलकुलेटर के पास ही जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? And when it find that ki yeah, scientific calculator don't contains this function, it means this function contains to the parent. Getting my point? सबसे पहले कंट्रोल किसके पास जाता है? वो आपको मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, लेकिन पहले कंट्रोल गया है साइंटिफिक कैलकुलेटर के पास. जब उसे नहीं मिला तो कंट्रोल कहाँ गया? कैलकुलेटर. गेटिंग माय पॉइंट सुकेश? गुलाम? यस यस. यस सर. ठीक है, ठीक है. अभी मैं उसको प्रूव भी करूंगा. डोंट वरी में, एवरीथिंग यू विल गेट इट हियर प्रूव्ड. कोई भी चीज यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग एज जस्ट लाइक ए हाइपोथेटिकल. ठीक है, सब चीज को आपको क्योंकि आपको यहाँ याद नहीं करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर आप याद करने बैठोगे यू कैन नॉट लर्न सो मेनी थिंग्स इन द जॉब. सो ऑलवेज ट्राई टू रिलेट इट. ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई. इट इज प्रूव्ड दैट साइंटिफिक कैलकुलेटर डू नॉट कंटेन द फंक्शंस एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली, बट स्टिल यू आर एबल टू कॉल इट यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट. सो इट मींस these functions are available here. Yes or no? Yes. And this is inheritance. Inheritance means when one class want to get the properties and functions of a parent class, this is called inheritance. तो इनहेरिटेंस का पर्पस क्या होता है? सबसे पहला इनहेरिटेंस का पर्पस कि आपने क्या किया, यू हैव रिड्यूस द डुप्लीकेसी ऑफ द कोड, रिडंडेंसी ऑफ द कोड. आपको ये कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ा ना. No. गेटिंग माय पॉइंट? एक क्लास में आपके कोड लिखा था, दूसरी क्लास को चाहिए था तो आपको लिखना नहीं पड़ा. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस. ओके, दिस The इज same वन way थिंग. हम in the same way राबिया क्लास में भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? राबिया क्लास में बिल्कुल कर सकते, साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्कुल कर सकते हैं. आई टोल्ड यू एनी क्लास कैन एक्सटेंड एनी अदर क्लास. ओके, ठीक है, कोई भी अगर हम क्लास वो का. अगर हम वो एक्सटेंड करेंगे तो फिर वो हमको ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एडिशन स्क्वायर मेथड्स यूज कर सकते हैं ना? नहीं, क्या ऑब्जेक्ट करने की जरूरत है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर राबिया का. अच्छा, है ना भाई? देखो ऑलवेज हियर आल्सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए चाइल्ड क्लास. राबिया में आप चाइल्ड का बना रहे हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर के नहीं. when Rabia when itself will create the function. ठीक है, then are you getting my point? Got it. Okay, so what question you are asking, that I will also tell you. What happens that there is one more thing here. We are talking about a parent. Calculator is a parent, scientific calculator is a child. Is it okay? Yes. And we can create a hierarchy of one more. ये भी तो होता है ना, हमने सुना है, हम है, पापा है, दादा भी तो होते हैं, परदादा भी तो होते हैं. Yes or no? Yes. Yes. So inheritance doesn't mean that it will follow for a one level of hierarchy. It can follow at multiple level. So I am showing you one thing. Let me do one thing. I'm doing one thing also. Let me put these classes in different package also, so that you can understand one more thing. One more concept I have to tell you about here. Anybody guess? In the previous session, I told you that one thing is left that is totally dependent on inheritance. Anybody can rewind that thing? Split. No, in the access specifier, I told you about one concept, protected. Private. मैंने no protected. मैंने बोला था I have told you about the access specifier, private, Yes. default, public. I told you one more access specifier is there, that is called protected. But you will learn that concept when you understand the concept of inheritance. Getting my point?
चलिए एक और कैलकुलेटर बनाते हैं. वन इज कैलकुलेटर, वन इज साइंटिफिक कैलकुलेटर, एंड लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ वन एडवांस. यू कैन टेक द एग्जांपल एडवांस. You can assume that advance is more than the scientific calculator. Are you getting my point? Yes. Yes. So I'm just giving you the example so you can understand the concept of inheritance. Calculator. Now I'm also I'm actually I've given the wrong name. Now this is very bad thing. Whenever you want to rename anything in the, you can say Eclipse, you can use this option, refactor, and then rename. And here I'm going to write R, and then let me finish. Okay, now again same thing. This time I'm not going to make any new thing. Now tell me, in the advanced calculator, you want everything: calculator, normal function, scientific calculator, advanced function. Yes or no? Yes. So Yes. now you have options. If you want to add a advanced calculator, which should contains the normal function as well as some other function, but not the scientific calculator. So you will do one thing. You will extend this class with simple calculator. Are you getting my point? अगर आपको अपने कैलकुलेटर के फंक्शन चाहिए और साइंटिफिक कैलकुलेटर के नहीं चाहिए, अपने खुद के कुछ अलग डिजाइन करने, then you will make an extend of calculator. Yes or no? Yes. So Yes. if I will create this thing, can you tell me how many parents are there? If I will make this relationship, how many parents are there in One. my this project? One parent One. calculator. One And parent. how many childs are there? Two. Two Scientific times. calculator is also a child of calculator, and advanced calculator is also a child of calculator. Yes or no? Yes. Okay, so this is called one parent and two child. And when you want to, this is called where Single one, level. yes, you can say one level and you have two childs are there. And when you want to make a hierarchy of parent, child, and then grandchild, then you will make, Yes. then you will make a relation something like extend scientific calculator. Getting my point? Yeah. So now if I will try to make this relationship, it means calculator is a parent, and then scientific calculator is a child of calculator, and advanced calculator is a child of scientific calculator. So for advanced calculator, calculator is a grandparent. Yes or no? Yes. Advanced calculator के लिए scientific calculator बन जाएगा parent और calculator क्या बन जाएगा? Grand. Good. And Anybody have any doubt? किसी को doubt हो अभी पूछो. No. Great. So now you have again thing. It means if I'm not going to create any functions here, in that case also, 6 functions are available in this class. Yes or no? 2 this one and 4 from calculator. So 6 functions will be available in this class. Yes or no? Yes. Yes. And you want to Yes. check? You want to check? Just go in the, you can say simply go to this Rabia class and now try to create, instead of creating the object of scientific calculator, create the object of Advanced. advanced calculator. And you will see it will work properly. I've just changed the object. Are you getting any error here? No. No. Reason is that these functions are available in the Advanced. 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 So actually what happens that inheritance is basically used when you want to remove the redundancy of code, when you want to get the code from any other class into your own class, just like a owner, then you use the inheritance concept. You got my point? Yes. अब देखो राबिया चाहे तो राबिया क्या कर सकती थी, अगर if you simply take the example if scientific calculator want to use the functions of the calculator class, अगर scientific calculator को calculator class के function केवल use करने थे, then scientific calculator only create the object of the calculator. Yes or no? Scientific calculator within its own class can create the object of a calculator class to use it. So he can use it, but he is not a owner of that function because there is no relation between calculator and scientific calculator. Are you getting my point? अगर मैं again I'm saying maybe it is little bit confusing, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं I only want to use this function, अगर मैं calculator function को scientific calculator में use करना चाहता हूं, I don't want to make them available as a owner, तो मैं क्या कर सकता हूं? I can create the object of calculator. Yes or no? Yes. लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे कैलकुलेटर के फंक्शन, आई नीड ऑल दोस फंक्शन इन माय ओन क्लास जस्ट लाइक ए ओनर. ओनर का मतलब क्या है? आई कैन कॉल दोस फंक्शन विद द माय ओन ऑब्जेक्ट. यस और नो? Yes. Yes. तो आपको जब भी कभी ऐसा करना है, वेयर यू वांट टू यूज द फंक्शंस ऑफ एनी अदर क्लास इन योर ओन क्लास जस्ट लाइक ए ओनर, क्योंकि चाइल्ड भी क्या होता है? पेरेंट की चीजों का ओनर ही तो होता है. यस और नो?
तो आपको you should use the inheritance concept, and inheritance you can use at multiple level, and it is called when you are creating a one parent, then child, then child, then child. It is called multi-level inheritance. It is called multi-level. Level inheritance. Is it okay? This thing is clear? Yes. Yes. Okay. Now I will tell you one thing. सर Very, very important thing I will tell you. सर Yeah, tell me. सर जैसे आपने मतलब ये चाइल्ड दो दो क्लास को एक्सटेंड किया, मतलब एक में कैलकुलेटर को एक्सटेंड किया, एक में साइंटिफिक कैलकुलेटर को एक्सटेंड किया। क्या सिर्फ अगर हम 3 क्लास बनाने की जगह दो क्लास बना के, मतलब एक मेन क्लास हो गई जो कि पेरेंट है और जो दूसरी क्लास है वो चाइल्ड क्लास है, अगर हमें अच्छा आप ऐसे मल्टीपल क्लासेस भी क्रिएट करने पड़ेंगे जब अगर मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करना है उसकी प्रॉपर्टी? Exactly, क्योंकि क्लास इज जस्ट लाइक प्रेजेंटिंग ए ह्यूमन बीइंग, है ना। अब देखो एक पेरेंट होगा, 2 चाइल्ड होंगे, 2 चाइल्ड का मतलब 2 क्लासेस, एक पेरेंट का मतलब 1 क्लास। गेटिंग माय पॉइंट? सर और एक क्वेश्चन है, क्या टेल मी? अगर मुझे 2 क्लास को एक्सटेंड करना है तो इज दैट पॉसिबल? मतलब कैलकुलेटर एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड एडवांस में मुझे दोनों क्लास एक्सटेंड करने हैं एग्जांपल, तो इज दिस पॉसिबल? किनको करना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर को? मतलब 2 क्लास मुझे एक्सटेंड करने हैं, हाँ इज दैट पॉसिबल? I got your question. First of all, your question is relevant when you are talking about not talking about calculator and scientific calculator. क्योंकि देखो scientific calculator is already a parent child of calculator. Yes or no? And what scenario you are telling, that is called multiple inheritance. अब मैं बताता हूँ what you are saying that. Let me take the example of a class. एक class लेते हैं. This is class 1. Getting my point? Okay. एक class है 1 और एक class है there is another class that is 2. Getting my point? Yes. Now these 2 classes are independent. अभी कोई relation नहीं है, देखो simple class है. Now I want to do one thing. I have a third class. Yes. Okay, I got your question. Your question is saying that now you want to make, now these 3 classes are independent. There is no relation. No relation. Okay, आप क्या relation बनाना चाहते हो? This class should be the child of. You should extend 2 classes. Now tell me, in real world, it is possible? एक बच्चे के 2 पेरेंट हो सकते हैं? Not, don't think about that कि वो है ना, वो यशोदा का एग्जांपल मत लेना, वो कृष्ण जी का, जिनकी यशोदा भी थी और देवकी भी थी, है ना। तो आप अगर बोलोगे तो मैं फंस जाऊंगा, है ना। लेकिन फंस जाऊंगा तो उसको भी जावा हैज आल्सो कंसीडर्ड दैट थिंग आल्सो, जावा ने उसको भी कंसीडर किया है। बट इफ समबडी आस्क इन द इंटरव्यू दैट मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इन जावा, सिंपली से नॉट नॉर्मली। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्योंकि उसका रियल कॉन्सेप्ट ये है, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, दैट अ चाइल्ड कैन हैव ओनली वन पेरेंट। एक बच्चे के केवल एक ही पेरेंट हो सकते हैं। इट कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास। तो देखो मैं करता हूं 1 को, आई एम एबल टू डू, ठीक है। अब इसके पास कोई तरीका नहीं है, अगर मैं ऐसे करूं तो ऐसा कोई कीवर्ड होता नहीं है। इफ आई राइट एक्सटेंड्स और यहां पे लिख दूं, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता है। दूसरा, अगर आप ये सोचो कि अरे ये ऐसा तो नहीं प्रदीप कि कॉमा करके होता हो, तो ऐसा भी नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? एंड यू कैन सी द एरर हियर। व्हाट इज द एरर? 1 एंड यू विल सी, लेट मी राइट, it is giving you this is a syntax error. Yes or no? Okay. So actually क्या होता है, and this is a logical thing, that in the real life a child can have only one parent. ठीक है, मेरा तो मतलब ऐसा था कि कुछ फंक्शन इस क्लास में है, कुछ फंक्शन उस क्लास में है, और मुझे उन दोनों में बीच में रिलेशनशिप नहीं, तो मैं कैसे उसमें मतलब इस क्लास में कैसे उनको ले लूं, ये मेरा क्वेश्चन था। बट गॉट इट, मतलब इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें पॉसिबल, एंड व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटर। क्योंकि देखो क्या है, कैलकुलेटर इज अ पैरेंट, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने ऑलरेडी बना दिया। अगर आप मुझसे बोलते हैं तीसरी क्लास बनाओ जिसमें दोनों चीजें चाहिए, तो मुझे दोनों चीजें चाहिए ही क्यों? अगर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का बना दूं तो इसके पास तो ऑलरेडी कैलकुलेटर की चीजें हैं। यस और नो? तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओनली द नीड इज दैट व्हेन वी हैव अ क्लास 1 दैट इज सम डिफरेंट क्लास, 2 is some different class, and in the third class I need the properties from both the classes. Are you getting my point? And this is called, अब इसको क्या बोलेंगे, multiple inheritance. तो multiple inheritance is not possible in Java. This is the one answer. है उसके आगे एक लगा स्टार है। स्टार बहुत खतरनाक चीज होती है। हर प्रोडक्ट में नीचे से स्टार लिखे छोटा सा लिखते हैं, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, बहुत खतरनाक चीज होती है वो। एंड हियर आल्सो आई एम सेइंग द सेम थिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा स्टार। ठीक है, I will tell you the meaning of a star. Getting my point? Yes, sure. Got it.
So here this is not possible, but here before that let me show you one thing. तो ये होता है क्या कि यहाँ पे when you are doing this thing, you will see here that whenever Rabia want to call the functions from the scientific calculator, usually you do this thing. आप क्या करते हो? Scientific calculator का क्या बनाते हो? Object बनाते हो, और scientific calculator का क्या बनाते हो? Reference. In the first class I told you that usually I talk about that SC is a object. लेकिन actually देखा जाए, if you go into the detail, the right side is known as a object and left side known as reference. मैंने पहले बताया था, and this is very very important thing. मैंने बताया था कि यूजली वी टॉक इट, हम जनरल में बार बार देखो अच्छा बोलने में क्या होता है, इट इज नॉट सो मच कंफर्टेबल कि मैं बोलूं ये रेफरेंस है, इट्स डॉट पीपल से दैट एससी इज अ ऑब्जेक्ट, लेकिन टेक्निकली इट इज अ रेफरेंस व्हिच इज एक्चुअली रिफर द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय दिस वन. गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया, व्हेन यू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास you have to create the reference of same class, yes or no? Yes. यहाँ पे जो SC के पहले जो क्लास का नाम लिखते हैं वो कौन सी क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, yes or no? Yes. है ना? Now today I will show you one different thing, that you have an option that when you are creating an object of a class and you need a create through reference of a class, and there is a relation of parent and child, you can create the reference of a parent class. ये एरर नहीं देगा. Are you getting my point? Are you getting my point? पेरेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस रेफरेंस बनाया और उसमें हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि पेरेंट के रेफरेंस से हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं. Getting my point? Don't think about this error. इस एरर के बारे में मत सोचो. I will tell you why this error is coming. Okay? ठीक है, अभी आप सिर्फ सोचो ये कि you have an option that in Java, if you are creating an object of a child class, then you can create the reference of a parent. Getting my point? Yes. लेकिन इसका वैसा वर्सा नहीं है. You cannot create the object of a parent class. If you are creating the object of a parent class, you cannot create the reference of a child class. तो आपको देखो ये ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो चाइल्ड को रिफर करने के लिए, but you cannot create the reference of a child to point a parent. Is it okay? Yes. So Clear. here I will give you the example. Again, I am trying to give an example that is not a very very good example. I am only giving you this example so that you can remind this thing in your mind easily. मैं आपको जो एग्जांपल देने वाला हूँ, अगेन आई एम सेइंग दैट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, क्योंकि आप में से बहुत लोग बोलोगे ये एग्जांपल गलत है, ठीक है, बट फॉर योर लर्निंग पर्पस सो दैट यू कैन कीप दिस टॉपिक इन योर माइंड, दैट इज अ इजी वन. चलिए, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, दिस इज अ वैलिड थिंग. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ रेफरेंस मींस you can say reference is pointing to the real object, yes or no? So if you talk about, अगर आप reference को एक finger मानो, तो you can think about in your real life when you are talking to your parent, आप उससे finger लगा के बात कर सकते हो? कोई ऐसे बात करता है, पापा इधर आओ, पापा इधर आओ? Are you getting my point? So when you are talking, it is ideal scenario that the ideal boys, ideal girls do not talk to their father or parent just like पापा इधर आओ उंगली लगा के. So you cannot point to them. Are you getting my point? है ना? लेकिन आप जब आपके पेरेंट आपसे बात करते हैं वो तो ऐसे करते हैं, ये लड़का पढ़ता नहीं है, कम. Are you getting my point? Yes. So it is something, again I'm saying that it is just like a behavior. So मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ इट इज अ बैड बिहेवियर कि जब कोई पेरेंट अपने बच्चे से बात करता है तो वो फिंगर पॉइंट करके बात कर सकता है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग. लेकिन अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट से फिंगर उठा के बात करता है पॉइंटिंग टूम 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 करके, सो इट इज नॉट अ गुड बिहेवियर. तो यहाँ पे आप ऐसे इसको याद रखते, अगेन आई एम सेइंग दैट इज नॉट अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल, बट यू कैन पॉइंट इट दैट अ पेरेंट कैन रिफर टू अ चाइल्ड बट ए चाइल्ड कैन नॉट रिफर टू अ पेरेंट. इज इट ओके? Yes. ठीक है. Okay, this thing is done. So I will come back to this thing again, but before that I will cover another topic. Yeah. सर इसमें ये जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं हम दूसरे क्लासेस को, जैसे पेरेंट 3 मतलब सॉरी साइंटिफिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर, पर सर इसमें कहीं पर हम लोग ने इनहेरिटेंस का कोड तो लिखा नहीं, मतलब एक्सटेंड करके, तो फिर ये ऑब्जेक्ट पेरेंट मतलब पेरेंट और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है?
नहीं because हमने import किया है because इसलिए. because done import is some other thing. Import means you import means in your class you are telling that you want to use this class. Are you getting my point? Import का Okay. सिर्फ मतलब होता है कि राबिया क्लास को आप बताते हो कि आपकी क्लास के अंदर मैं ये वाली क्लास को इस्तेमाल करना चाहती हूँ. Are you getting my point? Okay. ठीक है. Because and the also reason is some very good reason behind that. आपको लगता है कि आपके पैकेज में क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम की एक ही क्लास हो सकती है? I will show you one thing. Scientific calculator is available in the 3. Yes or no? हो सकता है आपके इसी में कहीं और पैकेज में in the one package there is another class with the same name. It is possible. Yes or no? Yes or no? एक इस दुनिया में you can talk about, let me take the example of a society. एक सोसाइटी में दो घर में सेम नाम से लोग नहीं रह सकते. Yes, sir. Are you getting my Yes. question? Hmm. You can take the example, this 8 complete automation batch is just like a society, and 1, 3, 2, these are the flats. So scientific calculator is a person who is living in a one flat. The same name, the person with the same name cannot live or reside in the 3. Yes or no? Yes or no? Yes. अब आप मुझे बताओ, जब राबिया यूज करेंगी तो राबिया कौन सा यूज करेंगी, कैसे पता चलेगा कि राबिया किसको यूज करना आती है? They will make import statement that she want to use from the 3 dot or 1 dot. Getting my point? Yes. तो यहाँ पे import का मतलब और कुछ नहीं, simple. In Rabia class, when she want to use the scientific calculator or calculator class, it is just giving the path of that class. Getting my point? Are you getting my point? Yes, yes. चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज दे आर लिविंग इन द डिफरेंट पैकेजेस. अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर फ्रॉम दिस वन. और एक काम करते हैं, राबिया, वेयर इज राबिया? राबिया इज द मेन क्लास एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर इज हियर. Okay, so she is using the scientific calculator and calculator also. Let me do one thing. Just put this scientific calculator in the main package. Getting my point? Now tell me, are you able to see any import for the scientific calculator? No. No. The Reason is class- that If अब तो class कोई is doubt- available in the same package, Yes. import नहीं होगा. इंपोर्ट. अब तो देखो सिंपल सी बात होगी ना, एक फ्लैट के अंदर अगर राबिया साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द सेम. अगर यू कैन टेक द एग्जांपल, वेरी फनी एग्जांपल आई विल गिव यू. टेक द एग्जांपल दैट कि मैं मेरे पास मेरा एक बेटा है और आपका एक बेटा है. ओके, एंड वी आर लिविंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स. आपके बेटे का नाम भी राहुल है, मेरे बेटे का नाम भी राहुल है. व्हेन आई विल से राहुल, तो हु विल कम? माय सन और योर सन? Yours. भाई सबसे पहले तो मेरी आवाज मेरे घर के अंदर प्रायोरिटी उसी को मिलेगी ना. और अगर मुझे बुलाना होगा सुकेश या राहुल के गुलाम के बेटे को, तो आई विल से गुलाम का राहुल, सुकेश का राहुल. यस और नो? Yes. तो इसीलिए मुझे देखो, जब राबिया वाज यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास, बिकॉज इट वाज इन द सेम पैकेज, इट डोंट नीड टू इंपोर्ट इट. बताना ही नहीं पड़ा. अब देखो कैलकुलेटर अब भी दूसरी जगह, मैं कैलकुलेटर की उठा के भी यहाँ लाता हूँ, देखना क्या होगा, व्हाट विल हैपन. You need to use the calculator import. Yes or no? कहीं दिख रहा है वो अपने आप चला गया? Yes. अलग है. क्योंकि जरूरत ही नहीं है. Now you got the, this is very important and good question. Thank you, Rabia. So the thing is that import means when you want to use any class which is actually available in your project, but if you want to use any other class in your another class, so in another class where you want to use the class, you have to make a reference of that class. You have to give the path of that class, and that is known as import statement. Getting my point? Yes. ठीक है. Now you got the answer. Yes. Chali. So now we are going to hold this topic here because one topic is related to this thing, and that is called type of classes. तो अभी तक इस टॉपिक को यहीं पे होल्ड करते हैं, फिर मैं दोबारा आऊंगा वापस यहाँ पे. ठीक है. So let me come here. I am taking the example of a class. एक क्लास का एग्जांपल लेता हूँ. I am designing a class student, or let me take the example of any other class. I am taking the example of a car. Okay, car.
अच्छा सर एक मिनट सर, ओके सर, आप जब क्लास क्रिएट करने जाते हो ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सेस मॉडिफायर्स, हाँ जी बिल्कुल न्यू, वेरी करेक्ट? गुड, सो न्यू। उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे मॉडिफायर्स में लिखा है पब्लिक सेकंड पैकेज, तो ये पैकेज भी मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है क्या? पैकेज का मतलब ही हो गया एक्चुअली की डिफॉल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैकेज मतलब रिकॉर्ड, ओके यस, ओके डिफॉल्ट जो पैकेज का लेवल का एक्सेस होता है उसी को डिफॉल्ट बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, गॉट इट। ठीक, चलो। और यहाँ पे देखो आपने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों हाईलाइट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास जो होती है, क्लास कभी भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं होती है। अगर क्लास प्राइवेट हो जाएगी तो आप मुझे एक बहुत अच्छी बात बताओ, वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी एंड दैट इज रिलेटेड। कोई क्लास को आप क्लास को यूज करने के लिए क्या करते हो, आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, यस और नो? यस, अब जब आप क्लास को प्राइवेट बना दोगे तो कोई क्लास को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, यस और नो? या आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम हमेशा क्लास में पब्लिक क्यों लिखते हैं, कभी प्राइवेट क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज टेल मी वन थिंग, 99% केसेस यू आर क्रिएटिंग अ क्लास एंड सम अदर पर्सन लाइक राबिया, शी इज ट्राइंग टू यूज, यस और नो? अब आपने अगर अपनी क्लास को प्राइवेट बना दिया तो क्या राबिया को प्राइवेट चीजों का एक्सेस मिलेगा कभी? नहीं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एवरी टाइम यू क्रिएट अ क्लास, क्लास हमेशा क्या बनाई जाती है, पब्लिक। क्लास को सबको सबको क्लास का एक्सेस दे दो, उसके अंदर किस चीज का एक्सेस देना है नहीं देना, यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है, आई कैन गिव द अनदर, यू कैन से रियल लाइफ एग्जांपल। जब कोई अपना घर बनाता है ना, तो आपका घर इट इज ऑलवेज बी अ पब्लिक थिंग। पब्लिक का मतलब ये मत समझना, घर का मतलब पब्लिक क्यों है? द थिंग इज दैट बिकॉज यू कैन से इफ यू वांट टू कॉल योर सर्वेंट, आपका सर्वेंट वहां आ सकता है, ठीक है, आपका आपका योर मिल्कमैन कम, यस और नो, है ना, सब कोई आपके घर के अंदर, मतलब ही कैन एंटर टू योर हाउस, बट आफ्टर दैट यू डिसाइड दैट कौन आपके किचन तक जा पाएगा, कौन आपके ड्राइंग रूम तक जा पाएगा, एंड हु कैन एंटर टू द बेडरूम, यस और नो? यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपने अपनी किसी को क्लास के अंदर घुसने का राइट ही नहीं दिया है तो इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह गया, यस और नो? यस, सो आप हमेशा देखना, क्लास विल ऑलवेज बी अ पब्लिक, क्लास कभी प्राइवेट बनती ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, सो दिस इज द, इसके बाद क्या होता है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द क्लास पब्लिक सो दैट एवरीबॉडी कैन गेट एक्सेस। मैंने हर बार आपको बताया, जब आप ये कोड लिखते हो ना, तो कोड में देखो वेयर द कंट्रोल इज गोइंग, कंट्रोल क्लास के अंदर जा रहा है, यस और नो? अगर ये प्राइवेट होगी तो कभी इसके अंदर जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक ए बाउंड्री, इसको अपनी रियल लाइफ का ये मान के चलो, इट्स योर फ्लैट, इट्स योर होम एंड इट इज जस्ट लाइक ए बाउंड्री। अगर ये बाउंड्री पब्लिक की जगह प्राइवेट होगी, नोबडी कैन एंटर टू इट। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो उसके बाद क्लास इज ऑलवेज पब्लिक, उसके बाद किस फंक्शन को प्राइवेट पब्लिक बनाना है, किसका एक्सेस देना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। गेटिंग माय पॉइंट? यस, Okay, let me come back here, and that is also a very very good question. चलिए यहाँ पे आते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ कैलकुलेटर क्लास। जब मैं कैलकुलेटर क्लास को बना रहा हूँ, किसी भी क्लास को बनाता हूँ, यू हैव सीन वेरी वेरी you have focused on a particular thing. Suppose I want to create some functions here. Public कार के कोई फंक्शन बता सकता है? कार के फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? स्टार्ट, यस और नो? Yes. स्टार्ट, रनिंग, स्टॉप। हाँ, ये तो बहुत जरूरी फंक्शन है। अरे कार स्टार्ट नहीं होगी तो कोई खरीदेगा? कार स्टार्ट, Gear. देखो कार के बारे में एवरीबॉडी इज गोइंग टू नाउ स्पीक, है ना, कि सबको पता है। कार स्टार्ट हो गया। 3 फंक्शन तो जरूर बना ले, बहुत जरूरी है, स्टार्ट, स्टॉप। Stop. रनिंग। मेरे पास एक कार है that don't have a feature of a stop, nobody is going to buying it, yes or no? और क्या बोला? रनिंग। रनिंग, and that is something like that you can say gear, है ना? Gear. You call it gear, कि एक गियर, 2 गियर, and so many other properties are there। और भी प्रॉपर्टी होती है, हर क्लास का अपना क्या होता है, you have a engine type, body, color, yes or no? Yeah. है ना, तो कलर भी हो सकता है। So I'm just talking about color can be a function, color can be a property. Function can be get color, you can get the color of it. So I'm just giving the example that whenever you design a class, you always do one thing, you create a function, yes or no? And whenever you create a function, you define a body of that function, this one, curly bracket, yes or no? Yes. Whenever you design a class,
you always, whenever you design a class and you want to put a function there, आप क्लास में कुछ मत रखो. चलो ये देखो, मैं कुछ नहीं रखता हूँ. There is no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कट कर देता हूँ. Let me cut it everything here. There is no problem. There is no error. Okay, but when we want to put some functions here, it is mandatory to give the body. Yes or no? आपको मैं दिखाता हूँ. इसकी body को हटा दो यहाँ से. It is giving error. What error it is giving? It is saying that mark a semicolon to complete. Yes or no? Yes. चलो आप ये बोल रहा है तो हम मान लेते हैं, मैं इसी की बात मान लेते हैं. मैंने कहा still it is giving error. Yes. What it is saying this time, you can say the error is little bit different. What is the, can anybody read the error for me? This method requires a body instead of a semicolon. इसका मतलब देखो उसने error तो बदल दी. इसका मतलब ये भी एक valid चीज थी, क्योंकि देखो when I was not putting the semicolon here at that time, he was giving the error please put a semicolon. So I put a semicolon. When I put a semicolon, it start giving a different error that this method requires a body instead of a semicolon. Yes or no? Yes. Yes. इसका मतलब एक चीज तो है, whenever you are designing a class, in the class you have to declare the function as well as you have to define the body. Getting my point? Yes. Yes. आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ. When this part of your function, जहां से लेकर आपका जो function का नाम यहाँ तक का part होता है, this is called declaration. And when you define these two curly braces, this is called the body of the function. This is called the declaration or the signature of the function, and it is called the body of the function. Getting my point? Yes. तो आप अपनी क्लास में जब भी किसी फंक्शन को डिफाइन करते हो, so till now you have learned that you have to declare the function as well as you have to define the body. Getting my point? Yes or no? Yes. And usually you do this thing. In that case, there is no problem. But when you want to declare the function only in this way, when you want to declare a function, you don't want to define a body for that. In that case, you have to pick a solution for this. How many solutions you are getting here? Add body, I'm not interested. What is the second one? Change car start to abstract. Yes. So whenever you intensely want to declare a function and you don't want to define a body, Java says that you have to use a keyword abstract. In the declaration of your function, you have to use a keyword. Getting my point? Yes. Getting my point? तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो, intensely you want to do this thing that you want to declare the function only, you don't want to define the body, तो आपको you have to put a keyword in the function that is called abstract. Abstract का मतलब क्या हो जाता है कि intensely आप एक एक्स्ट्रा फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो जिसकी बॉडी आप देना नहीं चाहते हो. Getting my point? Yes. Now see the error. Still the error is coming, but this time the error is a little bit different. What is the error? Can anybody read the error for me? Anybody? The abstract method start in type car can only be defined by an abstract class. Okay, now the condition is that whenever you want to define any method in your class as abstract, you have to actually define the whole class as abstract. अगर आपने अपनी क्लास में एक भी मेथड ऐसा एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की, और यू कैन से इन योर क्लास a single method, at least one method is defined as an abstract, you have to make the whole class just like a abstract. Getting my point? Yes. So now you have learned two type of classes. One class in which every method is non-abstract. अच्छा, अब मैं बार-बार ये term use नहीं करूंगा कि a function contains the declaration part as well as implementation part और body part. मैं इसको ऐसे define करता हूँ. अगर function की body नहीं है, that is called abstract, और function की body है, I will say non-abstract. Is it okay? Yes. So Yes. simple. So now we have learned two type of classes. A class which contains all the methods as non-abstract, known as normal class or concrete class. और अभी तक हमने वही पढ़ी है. Like calculator is the concrete class, normal class. Okay, but when we are talking about the car class, this car class is known as abstract class. So now what is the definition of abstract class? When your class contains at least one abstract method, you have to define your whole class as a abstract. Getting my point?
गेटिंग माय पॉइंट? Yes. ये अब होल क्लास का भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हैं क्या? किसका? ये मेन क्लास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार का। नहीं, तो आपको नहीं, आप एक्चुअली क्या देखो, क्लास को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, क्लास का स्ट्रक्चर नहीं डिक्लेयर करते, डिक्लेयर क्या करते हो, द थिंग्स विद इन द क्लासेस। गेटिंग माय पॉइंट? यस आप क्लास को तो रखते हो अपने साथ, क्लास के अंदर डिक्लेयर करने, मैंने बोलता है इन द होल जावा एक्चुअली यू हैव टू लर्न टू थिंग्स। एक क्लास होती है, उसके अंदर होती है प्रॉपर्टीज और फंक्शंस, तो सारे जो रूल फॉलो होते हैं दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। ये एक लिमिटेशन है कि अगर आपने एक फंक्शन को ऐसा बनाया है, सो व्हाई दे हैव मेड अ रेस्ट्रिक्शन टू मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट, मैं बताऊंगा। वो इसलिए बनाया है, व्हेन यू हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। गेटिंग माय पॉइंट? यस चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहां से एब्स्ट्रैक्ट हटा दो, इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दो। नाउ दिस इज अ नॉर्मल क्लास in the Rabia. Are you able to create an object of this class? Let me check. Car. कार न्यू कार। Yes. So you are able to create the object of this class? Yes or no? Yes. ठीक है. Now you see. Now I am doing one thing. I am going to the calculator class, in the car class, and just trying to add abstract method one, and then I have to define abstract here also. Now tell me, there is no error in the abstract car class, but are you getting the error in the Rabia? Yes. And what error you are getting? Cannot instantiate the type car. Type. Instantiate का मैंने आपको बताया था, instantiate is also known as a object. Instance को बोलते हैं object, तो कभी उसको object भी बोल सकते हैं, and we can call it instantiate. तो instance का instantiate मतलब हम उसका object नहीं बना सकते. Getting my point? एब्स्ट्रैक्ट का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, और जब ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते तो उसका रेफरेंस स्टोर नहीं कर सकते, जब नहीं कर सकते तो उसके फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना तो सकते हैं लेकिन उसकी चीजों को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखो, काइंड ऑफ प्राइवेट, इट इज नॉट काइंड ऑफ प्राइवेट, देयर इज अ स्पेशल कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन होता है ना कि अब हम अपनी चीजों को क्या करते हैं, अपनी चीजों को प्रेजेंट करते वक्त हम कुछ डिसाइड करते हैं कि हम क्या चीजों से देंगे, क्या नहीं देंगे और कैसे देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। एब्स्ट्रैक्शन इज समथिंग लाइक एब्स्ट्रैक्शन का जो एक्चुअल मतलब जानते क्या होता है? हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है हाइडिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ टेलीविजन। आपके घर में टेलीविजन आता है, तो टेलीविजन जब आता है ना तो आप उसमें क्या देख पाते हो? स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन। यू आर नॉट एबल टू सी द सर्किट, बट दैट इज टोटली कवर्ड। यस और नो? यस और नो? और वो उसको कवर करने की कोशिश करते भी हैं, ऐसा नहीं लुक एंड फील की वजह से, वो ज्यादातर उसे कवर करते हैं, अंदर उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि वरना क्या होगा, और गुलाम इज इंटेलिजेंट और राबिया इंटेलिजेंट। हम क्या करेंगे, अरे हमारे पास तो टाइम है, हम घर में क्या करेंगे, टीवी खुद बनाएंगे, फ्रिज खुद बनाएंगे, है ना? और जब सब बनाने लगेंगे तो खरीदेगा कौन? तो एब्स्ट्रैक्शन क्यों किया जाता है? यू ओनली प्रोवाइड टू द रिक्वायर्ड डिटेल टू द एंड यूजर, यू डोंट प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा थिंग दैट इज नॉट related to the user. Getting my point? Java is also abstraction then. तो Java उसके अंदर की भी डिटेल हमको पता नहीं है कैसे बनाया, बिल्कुल नहीं पता है। और आप एक बात बताओ, I will tell you one thing. You have created a calculator class. You are the owner of calculator class. Okay? आपको पता है आपने इसके अंदर लॉजिक क्या लिखा है? Yes or no? Yes. जब राबिया को कॉल करती है तो राबिया, when Rabia is trying to call it, आप जरा ऑब्जेक्ट बना के देखो, आपको उस क्लास का क्या क्या दिखता है? क्या उसके अंदर ये कोडिंग दिखती है कि फंक्शन और प्रॉपर्टी के नाम दिखते हैं केवल? I will show you today. देखो, so class is itself a best example of abstraction. By default class abstract ही होती है, मतलब abstraction means just like a concept. आप cal dot कर रहे हो, क्या क्या दिख रहा है आपको? It is showing you that there is a function with the name of addition. Yes or no? Yes. दो पैरामीटर पास होंगे दिख रहा है, रिटर्न कुछ नहीं करेगा दिख रहा है, लेकिन क्या ये दिख पा रहे हो आप कि इसके अंदर कैलकुलेशन की कैसे गई है? No. That is abstract. That is Abstraction. तो आप एंड यूजर को ये बोल रहे हो कि आपको कार चलानी है ना, आप स्टार्ट बटन कॉल कर रहे हो, आपको क्या मतलब कि उसके अंदर इंजन में कैसे चला रहा हूँ? कभी आज तक किसी ने झांक के देखा है अपनी गाड़ी में? नहीं। जिसको इंटरेस्ट होगा कार बनाने में वो जाके देखेगा। यस और नो? तो एंड यूजर इज ओनली गिविंग यू द थिंग विच इज
related to the end user. जो end user को वो देना चाहता है वो वही देता है. End user को it was mandatory to give the name of the function. अरे जब आप फंक्शन का नाम नहीं दोगे तो बेचारा कैसे पता करेगा कि कौन सा फंक्शन उसे यूज करना है. आप ये नहीं बताओगे इसमें पैरामीटर कौन कौन से पास कर सकते हो, कैसे करेगा. आप ये नहीं बताओगे what it is returning, so how he can hold the values. लेकिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं अंदर कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ. Yes or no? Yes. Getting my point? What? ठीक है. So now let me come back to the point. So you have learned two things. The two type of classes. One class is normal class, concrete class, ready to use class. That is called which contains all the method non-abstract. Second class is that a class which contains at least one method as a abstract. We have to define that class as a abstract, and we cannot create the object of that class. Yes or no? ठीक है. Okay. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना. When somebody is designing a class, that is very important question of the interview. आपने जब क्लास डिजाइन की, then you have tried to create the abstract method. Then forcefully you have to make the whole class as abstract. Getting my point? Yes. लेकिन अगर आपने पहले से ही अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना लिया है तो आप इसके अंदर चाहे एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखो या ना रखो, यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड योर क्लास एब्स्ट्रैक्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes. आपने अगर व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, in that case it is mandatory to define your class as a abstract. लेकिन अगर आपने अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट पहले ही बना लिया है तो now your flexibility, you are putting abstract method in your class, it doesn't matter. Getting my point? मतलब क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी नहीं है. अगर आपने क्लास को पहले ही बोल दिया, आप क्लास डिजाइन करते वक्त पहले आपने क्लास को बोल दिया कि मेरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, अब उसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता है ना. बट दैट क्लास इज ट्रीटेड एज एब्स्ट्रैक्ट एंड यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. लेकिन कोई डिजाइन करते वक्त उसकी नॉर्मल क्लास है और उसमें वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख रहा है तो उसको अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. यू गॉट द डिफरेंस? ओके. It means something like that. You have already decided that I am going to create an abstract class. So you created an abstract class. Now it's your choice. You want to put abstract method or not. Getting my point? वो बात दूसरी है कि एक सेंसलेस चीज है. क्यों? आप एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे, आपके सारे मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, कोई इसे यूज ही नहीं कर पाएगा. ये तो एक ऐसी चीज हो गई कि आपने एक ऐसी कार बनाई जिसके अंदर सारे फीचर काम करते हैं, सारे डिफाइन कर दिए, लेकिन आप उसे किसी यूज करने को दे ही नहीं रहे हो. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. तो whenever you are defining an abstract class, it's your choice, but it is not a good practice because the purpose of abstract is to define, to make a capability that your class at least should contain at least should. Why I'm using the word should? कि abstract अगर बना रहे हो तो कम से कम एक तो होना चाहिए. Getting my point? मतलब हम उस क्लास को तभी डालेंगे जब उसमें कुछ प्रॉपर्टी हमको देनी है और कुछ प्रॉपर्टी नहीं देनी, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे. जब कोई क्लास को डिजाइन करता है तो उसको क्लास को डिजाइन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, है ना. Okay, so आपने पढ़ लिया. Now if we define a definition of a normal class, concrete class or ready to use class is a class which contains all the method abstract or non-abstract. Second, what is abstract class? Abstract class is a class which contains at least one abstract method. Abstract class क्या होती है? जिसके अंदर एटलीस्ट एक मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है. अब योर इंटरव्यू कैन आस्क यू इट इज मैंडेटरी, तो उससे बोलना इफ यू डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास it is not mandatory, but at the time of designing, if you are trying to define an abstract method in a non-abstract class, then you can't do it without making the class as abstract. Getting my point? Yes. अब आती है तीसरी कैटेगरी. कोई बता सकता है what can be the third category of a class? क्या हो सकती है तीसरी कैटेगरी? एक ऐसी क्लास बना दे जिसके अंदर सारे मेथड क्या हो? बाइंड. सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? चलिए यहीं पे बताते हैं. सो टेक द एग्जांपल. इफ your class contains every method just like a abstract. तो देखो मैं सारे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना रहा हूं आपके लिए फॉर द टाइम बीइंग. every method is abstract, yes or no? तो आपको हर मेथड के आगे क्या लिखना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट. और उसके बाद क्लास के आगे भी लिखना पड़ेगा. yes or no? So now the thing is that, but this category is something different. इसमें क्या है? This is an abstract class where every function is abstract. Every function is abstract. तो जावा ने आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी कि अगर आपको पता है कि you want to design a pure abstract class, you want to design a pure abstract class, तो हर फंक्शन के आगे आपको abstract लिखने की जरूरत नहीं है.
मैं इसे मान लूंगा ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। बट आपको करना क्या पड़ेगा, instead of defining this abstract class you can use a simple word that is called interface. Getting my point? Are you getting my point? ओके तो इनडायरेक्टली आप ऐसे बोल दो कि क्लास की तीसरी कैटेगरी बन गई जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं। एन इंटरफेस इज अ थिंग वेयर ऑल द फंक्शंस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। आपको बताना नहीं पड़ता है, आप फंक्शन को डिक्लेयर कर दो, अपने आप वो समझ जाएगा क्योंकि मैं इंटरफेस हूं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, मैं एब्स्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, मतलब सारे क्लास सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होंगे तब इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यस, अगर आपके क्लास में आपको सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट रखने हैं, इफ यू वांट टू पुट ऑल योर मेथड जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट इन योर क्लास, you don't need to create an abstract class or normal class, simpler mark that class as a interface. इंटरफेस में वो अपना काम खुद ही करता है, वो अपने आप क्या मानेगा कि इसके अंदर के जितने फंक्शन लिखे गए हैं वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। मे बी आई कैन शो यू वन इंटरेस्टिंग थिंग, लेट मी गो टू दिस, इस जगह जाते हैं मेन के अंदर और यहाँ पे जाते हैं, और नॉट मेन हियर, हम जाते हैं बिन के अंदर, मेन के अंदर, एंड दिस इज योर क्लास। यहाँ पे आपको मैं दिखा तो पाऊंगा नहीं प्रॉपर, यहाँ पे आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं आपको दिखाता तो जानती क्या दिखता आपको, यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब इस क्लास को आप दोबारा डीकंपाइल करोगे या इफ यू हैव ए कैपेबिलिटी टू सी द कोड, गेटिंग माय पॉइंट, तो पता है इस क्लास में आपको क्या दिखता है, इस क्लास में दिखता है कि यहाँ पे क्या लगा है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जब एक चीज कंपाइल होती है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लगा देती है, गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes. आपको आप ऐसे कह सकते हो इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट यू डोंट नीड टू पुट अ कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, इट कंसीडर दैट ऑलरेडी कीवर्ड इज डिफाइंड। ये ऑलरेडी मान लेती है कि सारे फंक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। जस्ट वॉचिंग दिस थिंग दैट यू हैव एडेड ए कीवर्ड इंटरफेस। तो इंटरफेस आपका एक क्लास ही, आप इंटरफेस इज सम अदर थिंग, इंटरफेस अलग होता है, क्लास अलग होता है, लेकिन इंटरफेस को डिफाइन करते वक्त व्हाइल डिफाइनिंग द इंटरफेस यू कैन यूज अ प्रॉपर डेफिनेशन दैट इंटरफेस इज अ pure abstract class. Getting my point? Yes or no? Yes. Yes. अब आप इट्स मुझे बताओ, 100% एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट जो कीवर्ड लिया तो हमको मतलब चांस है कि हम उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, हाँ लेकिन इसमें नहीं कर सकते, इसमें है नहीं ना, कर सकते। इसमें नहीं कर। सो दैट्स व्हाई, तो तीन कैटेगरी बन गई। तो आपको अगर नाउ द सेम थिंग इज दैट इफ यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं कर सकते तो इंटरफेस का तो कर ही नहीं सकते होंगे, क्योंकि ये तो उससे बड़ा लेवल का रिस्ट्रिक्शन है। यस और नो? यस Yes. So now you have learned today, you have learned that a class which is abstract or a class is interface. You cannot create the object of interface as well as abstract. Abstract. Getting my point? Yes. अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए, एवरीबडी शुड आस्क दिस क्वेश्चन कि प्रदीप हम अपनी Yes. लाइफ में ऐसी क्लास बनाएंगे ही क्यों, अगर हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो ये तो यूजलेस है। यस और नो? Yes. क्योंकि आप ही ने बोला कि हम किसी क्लास को प्राइवेट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर हम अपनी क्लास को प्राइवेट बना देंगे तो कोई यूज ही नहीं कर पाएगा, और ऐसी चीज को बनाने का क्या फायदा जिसको कोई यूज ना करे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. यस तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, दीज आर द प्रोसेस of designing a class, a way of designing a class to make a strong implementation. ठीक है, अपने implementation को कैसे strong बनाया जाए उसको करने के लिए इन्होंने एक डिजाइन बनाया था। So inheritance is also known as a design methodology, एक डिजाइन करने का तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है and how we can use it। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते क्यों। ठीक है, सो आई एम गिविंग द एग्जांपल हियर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम तब बनाते हैं in the real life. What happens, sometime you will see what happens, you are trying to design a concept, you are trying to design a concept or you are trying to design a class। आप किसी क्लास को डिजाइन करते हो, उसके बारे में you are sure about few functions, आपको पता है कि स्टार्ट कैसे काम करेगा, स्टॉप कैसे काम करेगा। देखो स्टार्ट होना चाहिए ये भी आपको पता है ना, स्टॉप होना चाहिए ये भी पता है आपको। गेटिंग माय पॉइंट?
but you are not. Yes. आपको ये भी पता है कि गियर का एग्जांपल नहीं लेते, एक काम करो इन्हीं दो के एग्जांपल से बताता हूँ, दैट विल बी मोर गुड। आपकी क्लास में आपके कार में whenever you are trying to design a car, you know that there should be a start function, there should be a stop function, ये तो सबको पता है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? Yes. And when Okay. you know it that how this function should work, that is called implementation. Getting my point? वो काम कैसे करेगा, that is called its implementation, that is called its body. Getting my Yes. point? अगर आपको अपनी क्लास को डिजाइन करते वक्त ये पता है कि मेरे अंदर ये फंक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर आपको ये तो पता है फंक्शन होने चाहिए, बट हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क, at that time you mark that function as abstract. Getting my point? जब अपनी क्लास को डिजाइन करते वक्त आपको ये पता है मेरे अंदर ये फंक्शन होने चाहिए, लेकिन अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया है, या आपका ये डिसीजन आप इस क्लास में नहीं डिसाइड कर सकते कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, देन यू मार्क दैट फंक्शन एज एब्स्ट्रैक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? Can you please repeat once again and please tell in English or I can't Yes, understand English. I'm saying that whenever you are designing a class and you know that how many functions should be there, you are aware about that I know that there should be two functions, start should be there and stop should be there, okay? But you are aware about that, you are 100% sure about that how start should work, but you are not aware about that how stop should work. Then how stop should work, it means you are not aware about that what is the implementation of the stop functionality. Getting my point? In that case, you have to create this function in your class without your body. Getting my point? Yes, sir. And in this case, you have to design your abstract class. I will take you another example. Here I'm taking the example of car. So why I'm saying that you can't take the example of stop. Car can be a general thing. Car can be a petrol car. Car can be a diesel car. Yes or no? Car can be electric car. Yes or no? Yes or no? Yes. So now tell me, in your general class, the car class, or let me take some more complex example, then you will understand. I want to design a class that is called vehicle. I want to design a class that is called vehicle. So vehicle, every vehicle should also have a start function, stop function. Yes or no? Haji, every vehicle should have a start function and stop function. Yes or no? Yes. If it is a manual thing also, then also there is a concept of start and stop. अरे आप क्या यूज करोगे, घोड़ा गाड़ी साइकिल कुछ तो यूज करोगे. There should be a concept to start and stop it. Yes or no? Yes. है ना? And you should have an option of break also. Break मतलब होता है not totally stop, you want to hold for some time. Yes or no? Yes. Yes. So now here I'm taking the example. I cannot use the exact keyword break because break is also already a reserved keyword. So I can say break not. Let me take the example 1K also. So now tell me, at the time of designing this vehicle class, are you aware about that how start will work? Because here I'm talking about the vehicle. Vehicle can be any general vehicle. Yes or no? Yes. Can you decide that you know that this function should be a part of this class, but can you write a code for it? आप इसके अंदर का implementation लिख सकते हो? नहीं. आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, प्रदीप, it is a vehicle, it is totally. Now the first thing is that it is a you can say it is a how you can say air transport, water transport, land transport. Yes or no? So सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पूछोगे, प्रदीप, you are talking about a vehicle. Vehicle can be any general thing. This group can accumulate all the vehicles of this world. Yes or no? So how I can say that start function, how it will work? Because start for a plane is different. Start for a car is different. Start for a cycle is different. Start for a bike is different. Start for a bullock cart is different. Yes or no? Yes. Getting my point? Yes or no? Yes. तो जब आपको स्टार्ट का पता नहीं है, लेकिन आपको but you know that the start function should be there, so you have to keep the start function without the body. You have to make it abstract. Yes or no? Getting my point? Say yes or no. Yes. In the same way, if you know about the stop thing,
If you know about the stop thing, that how stop will work, if you know, then try to define the body of this function. Otherwise, you can simply make it abstract. Getting my point? Now the third function, break, should be there. Now I'm talking about the fourth function. Suppose take the example, public void. Suppose I'm talking about the color. We can write the implementation of a color. Suppose there is a function get color. There is any dependency on the color on the base of a vehicle? क्या किसी vehicle की color पे कोई dependency है? कोई भी vehicle किसी भी color का हो सकता है, yes or no? Yes. So it means at least we can write a code here that what is the color. Simply you can say return the color of vehicle, yes or no. Are you getting my point? Yes. तो कलर की कोई डिपेंडेंसी नहीं है. It means when you are designing a class where you know that few functions you have to put as a abstract and few functions you have to put a non-abstract, then you mark this class as abstract. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं. आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. You are only learning so that you can satisfy the interviewer. In the your real life, in your automation, you don't need to create abstract class. है ना? आप you are only 99% you are going to use the classes that is designed by some other person. Getting my point? अच्छा, if you take the example, अगर इसमें हमको color function नहीं रखना होता, now tell me what should I make this class? I should make this class abstract, or it is a better way to create this class as a Interface. getting my point? Yes. तो design करते वक्त what is your need, what function you want to keep in your class, it actually matters. That you want to design a complete class, you want to design an interface, or you want to design an abstract class. Getting my point? Yes. Getting my point? सर सर मुझे ये समझ नहीं आया, इससे पहले आपने जो एग्जांपल दिया जिसमें एक फंक्शन में बॉडी थी, है ना, कलर का, और बाकी सारे डिक्लेरेशन थे सिर्फ, तो आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, तो नीचे फंक्शंस में फिर हाँ यही, तो इसमें फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज यहाँ मेथड्स में क्यों नहीं किया? हाँ मैंने because I was focusing on the concept, है ना, अच्छा, करना मतलब चाहिए. हाँ पता इंटेंसली नहीं किया. नहीं कोई बात नहीं सर, मैं सोच रही थी हो सकता है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे ओके, if the concept will be there, error should not be there. Getting my point? ठीक है, चलिए. That is because I was talking about the other things, so मैंने सोचा चलो abstract क्यों नहीं. You got the point? सर फिर हम ये गेट कलर को कैसे दूसरे क्लास में सर, लेंगे? मैं एज हाँ यू सर एक और डाउट है, 1 मिनट. मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे ये मिक्स क्लास का कॉम्बिनेशन दिख रहा है जहाँ पे फ्यू मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड वन मेथड इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट, राइट? Okay, right. तो इसमें क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, राइट? हाँ जी. बट जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हम फिर कहीं और कॉल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. क्लास एब्स्ट्रैक्ट है उसका, Yes, right? so we even yeah. it is not abstract method, but we are not able to call this Yes. the get color method in other class because the class is abstract, right? Yes, right. Okay. And that is the real. आपको बहुत अच्छा इसका I will give you a good example. आप क्या ऐसी कोई vehicle बनाओगे जिसमें आप start नहीं बना रहे हो, stop नहीं बना रहे हो, break नहीं बना रहे हो, कलर आपको पता है कैसे करना है? क्या कोई ऐसी vehicle आप मार्केट में अवेलेबल करा सकते हो? Are you getting my point? Can you make this type of any vehicle available in the market where start is not working, stop is not working, brake is not working, color है उसका? Can you run this thing in the market? Are you getting my question? Yes or no? Yes. अगर किसी इसका रियल ऑब्जेक्ट आप क्या बना के, अगर किसी कार का स्टार्ट काम नहीं कर रहा है, स्टॉप नहीं काम कर रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहा है, केवल उसका ये पता है किस कलर में बनाया जाएगा, तो क्या उसका रियल ऑब्जेक्ट बन पाएगा? रियल में कोई इसको यूजफुल है वो बनाना? No. So that's why, and what we call the object, or object is the entity which is actually used in the real world. किसी क्लास को यूज करने के लिए उसका क्या बनाते हैं? Whenever we want to use any you can say instance of a class, when we want to use a structure of a class, we always use to create a object of that class. And here, because we are not defining each and every functionality of this class, so Java restricted us to create the object of this class. Getting my point? Java told us that if when everything will be ready, everything is ready, which can be used by everyone, everything,
then we will allow to create the object, and that is the case of pure concrete class, ready to use class. Getting my point? जब आप concrete word use कर रहे हो class में, तो what does it mean? Concrete means I'm talking about that when a class contains all the method non-abstract. That's why I'm using the term concrete class, ready to use class. ऐसी class जिसके अंदर सारे method non-abstract होते हैं, जैसे calculator, सारे method इन्हीं को क्या बोलते हैं? This is called ready to use class or concrete class. Concrete class मतलब ready to use class. Getting my point? ठीक है? Ranjita, you are getting? Okay. Ranjita, you are getting? Yes, sir. Okay. Okay. So now I will tell you what happens. That's so you asked this very, very good question, that if a class contains, take the example of this vacuum. This class contains at least one method as abstract, but we cannot use it. So now the thing is that how we can use the functions of this class and why we created this class. So we created this class, that is our, you can say, need, because we don't know about few functions, we know about few functions, that's why we are. So now the thing is that how we can utilize this class. Getting my point? So for abstract class and interface, it is a mandatory thing that you have to use the concept of inheritance. Getting my point? For abstract and interface, this is mandatory, that without using the inheritance concept, you cannot utilize it. Getting my point? Yes. अब वो कैसे? I will tell you. फिर This से is, एक बार बता दीजिए सर. Yes. Inheritance, what you say about inheritance? yes, I have said that previously you have learned the concept of inheritance, where you want to utilize, you want to use the functions of any other class in your own class, right? It was your choice. It was your choice. Getting my point? Because Yeah. while creating the scientific calculator, you don't want to create your own addition subtraction function. That's why you make a inheritance relation with the calculator. Yes or no? आप नहीं बनाना चाहते थे ऐसे क्या? But in case of interface and abstract class, it is mandatory to create a relationship of parent and child. And what is that? If you want to utilize this class, first of all, you have to create the child of this class. आपको मजबूरी सबसे पहले क्या करना है? I will take the example. Now let me do one thing. First of all, remove this card because I'm going to create a. Okay, let me do one thing. This is a normal class, yes or no? Yes. And this is vehicle class. If you want to utilize the properties and function of this class, then you have to first of all create a child of this class. How you can create the child of a vehicle? Car extends vehicle. Getting my point? Yes. So this is mandatory thing. If you want to use any abstract class or interface, in that case, it is mandatory to first of all create the child of that class. बिना child के आप इसको utilize नहीं कर सकते. But now again the thing is that rule is always same. When I will say public class extend vehicle, so everything which is available in the parent class, it will as it is copy in the child class. Yes or no? भाई क्या होता है? What is the purpose of inheritance? All the thing which is available in the parent class, same thing just like will be copied in the invisible format in the child class. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Now tell me one thing. Why it is giving the error? I will show you. It is giving the, what error it is giving? Tell me. The type car must implement the inherited abstract method vehicle.break. Exactly. It is saying that you have make an inheritance, but what will happen? You will make an inheritance. So all the functions which are available here, they will be available in the same way. So now the rule is same. All the functions which are available here, 3 functions are abstract. So this class also need to be made abstract. अब ये फंक्शन सारे ऐसे ही यहाँ पे आ गए हैं कॉपी होके इनहेरिटेंस, और इस क्लास में अगर ये एब्स्ट्रैक्ट आए तो उनको भी पूरी क्लास को क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? और अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो देन व्हाई आर वी आर क्रिएटिंग अ चाइल्ड?
Yes or no? ये तो it is just like a chain. Abstract, 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 abstract. We are just creating abstract of hierarchy of abstract. We are not able to use it. Yes or no? Yes. Now the second solution it will give you. What is the second solution? Add unimplemented method. Method. What do you mean add implemented? Now the thing is that in the inheritance, whenever you are trying to make a abstract class or as a interface as a parent, you have to define all the functions in your child class. आपको वो सारे फंक्शन जो पेरेंट में एब्स्ट्रैक्ट थे, आपको अपनी क्लास में you have to redefine it in the form of non-abstract. Oh. Getting my point? Yes. तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड के पास जब यहाँ पे आया, so child will also actually inherit the declaration part. You have to give the implementation part, and this is known as override. This is known as override. Override. Why you call it override? Because this function is already available in the parent, but without the body. So you are trying to give the body here. That's why it is called override. आप इसे लिखो या ना लिखो, by default it is written here. आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं लिखोगे ना तब भी it is understood, because I am just doing with the help of wizard, so that's why. Otherwise it is obvious when you have a method in the parent class and same method you have in the child class, that this concept is known as overriding. Getting my point? Yes. So how many function it is compelling? How many function Java is compelling you to define it? Start, stop, and break. It is compelling you to give the get color? No, because it is already defined. Getting my point? Yes. तो ये आपको किसके लिए करता है कंपेल? जो फंक्शन पेरेंट में डिफाइन नहीं है. So it will only compel you to implement only those functions which are not defined in parent class. Getting my point? Who is not clear? Ranjita, you is clear? You are clear? Yes, sir. Okay. So it is saying that it only compel you to define or implement only those functions which are not non-abstract in your parent class. जो भी abstract है केवल उनके लिए करता है. It doesn't mean that this class do not contains this method. This function is already available in this class in the invisible format. Are you getting my point? Yes. Okay. So here you can say this thing is known as override, and override it is mandatory. In case of abstract class and interface, you have to make an inheritance relationship, and it is mandatory to override abstract method. Getting my point? सर हाँ जी. वहाँ पे हाँ सर, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है जब आप मेथड और फंक्शन बोल रहे हो, मतलब जब method and function both are same things. तो फिर ठीक है, क्योंकि इसी को मेथड बोलते हैं. This is also known as a method and this is also known as function या मेथड दोनों एक ही बोलते हैं. ठीक है. उसमें बहुत it is you can say 0.1% का एक डिफरेंस है, that I don't want to tell you, वरना you will be very confused. ठीक है. 99.9% both are same thing. ठीक है सर. एक डाउट और है मुझे. जैसे हम लोग फंक्शन को बोलते हैं कि डिक्लेयर कर रहे हैं, देन हम फंक्शन लिखते हैं और उसके आगे सेमीकोलन लगा देते हैं, राइट? और जब डिफाइन करते हैं तो उसकी बॉडी होती है, करेक्ट? तो सर जब आपने ये एब्स्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया है तो मुझे ये समझ में नहीं आया जब वाई वी या मतलब इसका अलग से क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर हम किसी भी फंक्शन का मतलब दूसरी क्लास में अगर ऑब्जेक्ट बना के उसको हम कॉल कर सकते हैं और एक दूसरी क्लास है जहाँ पे हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं मतलब सेमीकोलन लगा के कि जिसमें उसकी कोई बॉडी नहीं थी फंक्शन की, राइट? तो एब्स्ट्रैक्ट भी तो यही कर रहा है. मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या कर रहा है कि अगर आप एक मेथड लिख रहे हो जिसकी कोई बॉडी नहीं है, देन यू हैव टू क्या करना पड़ेगा आपको कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? है ना? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है जब डिक्लेरेशन करते हैं एक मेथड का तो वो भी तो यही करता है, बस ये कर सकते हैं, इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट को कॉल नहीं कर सकते, वहां पे हमें कॉल कर सकते हैं दूसरे क्लास में. हाँ, तो यहाँ पे इसका पर्पस ये होता है. रीजन इज दैट नाउ द थिंग इज दैट वेकल इज ए just think about vehicle is a general class which has a function start, stop and break. Getting my point? When I design a car class, at the time of car class, actually here I will write a coding which is applicable for car.
I will say car start functionality. Getting my point? यहाँ पे आप कौन सी कोडिंग लिखोगे जो कार की फंक्शनैलिटी होती है स्टार्ट करने की. Getting my point? Okay. Now you have another option. You have asked very good question. Now you, because some person is only interested in the design of car. Now think about that. Any other person who is interested in the design of a bike class. Bike is also a vehicle, yes or no? Yes. So bike should also contain all the functions which is available in the vehicle. Actually देखा जाए vehicle is actually a vehicle is a parent of all the vehicles. Yes or no? You are taking the example of bike, car, aeroplane. Vehicle is a general thing. Yes or no? So Yes. this time you are saying that public class bike extends vehicle. Now this time, in this bike class also you have to implement all the method. But this time the implementation of the start function will be different from the car, because in this file you write the code to start the function of a bike. Start function of bike. Right. That will Right. be, you can say that implementation of a start function for bike will be different from the start function which is available in the car. Getting my point? Functions are Yes. same. आपको ऐसा क्यों किया गया? Because you know that if you talk about any vehicle in this world, if you go into the, you can say in India, you go to America, you go anywhere in the Europe, anywhere, everybody use the same term that we are going to start a car. Yes or no? So actually the function name should be same. Getting my point? And always आप अभी टीवी को भी स्टार्ट करते हो तो क्या स्टार्ट की जगह क्या वर्ड यूज करते हो? We always use start, stop. Yes or no? So the function name should be same. Only the difference is that the internal implementation is totally depend on the structure of your backend. Getting my point? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होता है, whenever you are talking about the backend, आप इसको देखो और जनरल बना सकते हैं. If we are talking about the car also, we can't write directly, we can't write the function of a start also. I can tell you the reason. The start functionality of a car for a petrol car and for a diesel car, that is totally different. Because it totally, you can say that you are just putting a key on the a particular hole and you are just twisting, but the how engine start, that is totally different for petrol engine. Yes or no? Getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes. तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करते हो? हमारी चॉइस ये थी, वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ ए व्हीकल एंड कार. अगर इसको और आप रिफाइन करो तो ट्रस्ट मी व्हाट यू शुड डू, आपको यू शुड मेक दिस क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट अगेन, बिकॉज स्टार्ट और स्टॉप डिपेंड करते हैं which car you are designing, a petrol car, a diesel car, a electric car, yes or no. So it totally depends कि आप at which level, at which extent you are designing your structure. Getting my point? If somebody is only interested in the calculator, I think they will not think about the scientific calculator. Yes or no? अगर किसी को 4 फंक्शन चाहिए तो क्या वो साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में सोचेगा? नहीं. No, sir. If you are thinking about the scientific calculator, then this question comes into the mind that you need some general calculator function should be available in your class. Then you are thinking about the inheritance something like कि मुझे बनाना ना. Are you getting my point? तो ये structure जो है fix नहीं है, ये तो आपकी depend करता है. Getting my point? Yes, sir. मतलब what is the need उस पे depend करेगा. Yes, what is the need at which level you want to, and because hierarchy is totally, you can say that. देखो vehicle, let me do one thing. I can show you a very good hierarchy in terms of vehicle also. Vehicle is very general. Yes or no? You can take the example. This is vehicle. VECHIL. Vehicle can be divided into the multiple parts. Yes or no? Then I will, when I ask you, you will also give me the, you can say different answer. Can anybody tell me? Vehicle can be divided into. Can anybody give me? Vehicle can be divided into some parts. Can anybody tell me? मतलब 2-wheeler, 4-wheeler. देखो आपने 2-wheeler 4-wheeler बोला, ये क्योंकि because it is your need. अगर मैं ये बोलूं, क्या बोलूं? एयर व्हीकल. यस और नो? है ना? मैं ये भी तो बोल सकता था हवा में उड़ने वाले लैंड व्हीकल. यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो आपका स्ट्रक्चर, व्हाट इज योर नीड, हाउ यू वांट टू डिफाइन योर स्ट्रक्चर, व्हिच इज द चाइल्ड एंड पेरेंट इन योर केस. देखो मैंने ये बोला, अब आप बोलते देखो आपने भी सोचा क्या, यू आर टॉकिंग अबाउट द 2-wheeler 4-wheeler, बिकॉज
the thing which is coming in your mind, that is actually related to the vehicle, something like a car, bus. Yes or no? Getting my point? Yes or no? You know, aeroplane is also a vehicle, that is air transport, used for air transport. So it depends on you. I will say air, land. Then if I will come to the land, again I can say, can you divide the land vehicle also? Tell me. फिर से कुछ बोलेंगे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कुछ बोलेंगे. It can be anything. It can manual is also not a vehicle, way of transport. Yes or no? Yes. आप बोल सकते हो ना, the vehicle can be also petrol vehicle. Diesel can be diesel, and can be one more category that is nowadays very, very popular. That is electrical. Yes or no? Electric. When you come down, then you can make a more hierarchy of child. Something like petrol can be also in the, trust me, petrol is also divided in so many parts, so many divisions. Like petrol also comes on the base of engine. You are using 4-stroke engine, you are using 3-stroke engine, you are something like that. Yes or no? Yes or no? Yes. तो hierarchy कहीं पे भी किसी लेवल पे जा सकती है. And everything is here just working as a structure. Now you decide. In your case, vehicle is an interface or vehicle is an abstract class. Air vehicle is an interface or your class. But the last level, when you are designing a last level of the class, that class should always be a concrete class. Concrete class. अगर आपके स्ट्रक्चर में लास्ट लेवल कोई बना है और उससे लास्ट लेवल के बाद कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी अ concrete class or ready to use class. क्योंकि अगर उसके नीचे कुछ बना ही नहीं है तो उसको यूज कैसे करोगे? Getting my point? Yes. So this is the hierarchy. In my case, I started designing from the, that's why in the starting I told you this topic is not so much complex, but sometimes it is complex. Reason is that when you want to try to understand the concept, तो आपको ये सब चीजें you have to understand deeply. कि आपको ये deeply समझना पड़ेगा कि structure कुछ भी बना सकते हैं. Getting my point? Yes. ठीक है? So it was, now the thing is that I told you whenever you want to use any abstract class, it is mandatory to extend this class. Okay, same thing is applicable for the interface also. Take the example. Let me make this vehicle as an interface. Remove this thing. Let me make it interface. INTERFAC. So in case of interface, again interface is also bounded with the same conditions. Yes or no? Yes or no? Yes. Now just see here. This time I also want to make a vehicle as a parent, but here little different. There is a little different, not in terms of a technical, in terms of syntax there is a difference. Whenever you are making a abstract class or a normal class as a parent, you are creating a normal class or an abstract class as a parent, you have to use keyword extend. But if you are making an interface as a parent, so everything is same. Only you have to write a different keyword that is called implements. मेरी बात समझ रहे? उसने केवल एक कीवर्ड डिफरेंट आपको यूज करके दिया हुआ है. इसके बाद एवरीथिंग इज सेम. Whatever you can think about abstract class. क्या होता है abstract class में? You have to abstract, implement, unimplemented method. Yes or no? Getting my point? Yes. So only why they have given this thing, so can easily anybody can tell by seeing this class. कोई भी बंदा इस क्लास को देख के आसानी से बता सकता है कि vehicle एक इंटरफेस होगा और कार क्या होगी? एक क्लास. Because we are using a implements keyword. If we are using extend keyword, definitely right side is a class. Yes or no? Getting my point? Yes. So this, yeah, tell me. सर जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि इसको देख के कोई भी बोलेगा कि मतलब व्हीकल को इम्प्लीमेंट कर रहा है इस क्लास में, करेक्ट? vehicle नहीं, कार implement कर रहा है vehicle को, तो vehicle is an interface because we are using implement keywords. तो सर इम्प्लीमेंट व्हीकल, व्हीकल मींस यहाँ पे व्हीकल क्लास का जो व्हीकल क्लास इज ऑल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन, राइट? vehicle is an interface. मैंने अभी इसको interface बना दिया. ये previously it was, so I was saying that when it was just like an abstract class, same for achieving the same inheritance you have to use a keyword extend. कीवर्ड एक्सटेंड का यूज करना पड़ता है अगर क्लास होती है, और अगर आपकी जो इनहेरिटेंस के जो पेरेंट है दैट इज इंटरफेस, यू हैव टू यूज अ कीवर्ड इम्प्लीमेंट. कीवर्ड का डिफरेंट आ गया बस. इम्प्लीमेंट व्हीकल
कि आपने व्हीकल क्लास में सिर्फ डिक्लेरेशन है उन मेथड्स का, स्टार्ट Yes. स्टॉप एंड ब्रेक का, That's why. अब Yeah. या आप सर अब उस क्लास में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं जो मतलब implement means now you Car can class. implement yeah You can implement in the car class. Yeah. Tell me. ठीक है sir. Okay. So now everything is same. I told you, if you have an abstract class, if you are interface, in both the cases you have to override, you have to implement it. ठीक है. अब interface में obvious सी बात है, in interface because every function is abstract, so you have to implement every function. In case of abstract class, only you have to implement only abstract functions. Getting my point? तो कहने का तरीका डिफरेंट है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ए एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस का, केवल कीवर्ड बदल जाता है लेकिन करने का तरीका दैट इज सेम. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. ठीक है. नाउ यू कैन डिफाइन द ओके. सो दिस थिंग इज नोन एज, यू कैन से दिस थिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस इन टर्म्स ऑफ क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस. तो आप इनहेरिटेंस, यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होता है इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, यू हैव टू मैंडेटरी यू हैव टू यूज द इनहेरिटेंस. लेकिन आप चाहो तो उसके अलावा अपने इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए टू रिड्यूस द रिडंडेंसी ऑफ द कोड, आपके पास एक कोड पड़ा है, उस कोड को यूज करने के लिए भी इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके? Yes. So now you have clear on this thing, what is class, what is concrete class, what is abstract class, what is interface, and what is the inheritance. You got it? Yes. 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 Now I will tell you two things, but in the next class, okay? And in that case, this time you have to 100% revise the thing, because trust me, otherwise you will not able to understand two important concepts. One is called overloading. People are very, very confused on it, but trust me, if you will revise and come with your question, and after that when I will tell you about this thing, you will easily understand. Overriding, one thing is known as overloading and one thing is known as overriding. Overriding. And ye do concept, these two concepts together are known as polymorphism. ये दो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्या जाने जाते हैं? Polymorphism. और इस पॉलीमॉर्फिस, दे आर नोन एज अ पॉलीमॉर्फिस कॉन्सेप्ट. और ये कॉन्सेप्ट आप तभी समझ पाओगे व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. क्लास, व्हाट इज कॉन्क्रीट क्लास, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज इंटरफेस क्लास. ठीक है. तो जब आप समझोगे देन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज फंक्शन ओवर. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड, द कंप्लीट डेफिनेशन इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग. And we will pick this topic in the next session, but before that, please I will request everybody, please revise the things. और मैं बताऊं, अगर आपने रिवाइज नहीं किया, ये टॉपिक ऐसा है भूल जाओ, and you will not ask a single question to me. और अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ गया, trust me, this topic and the function topic, these two topics, that how many type of functions, how inheritance is used, these two things combined together are widely used in the योर ऑटोमेशन. आपके ऑटोमेशन में बहुत यूज होगी. आप अगर समझ लोगे तो इंटरव्यू में अच्छे जवाब दोगे. काम तो इंटरफेस में आपको मैं सेलेनियम में करवा ही दूंगा बहुत आसानी से. दैट इज अनदर थिंग. लेकिन इफ यू विल एबल टू गिव द प्रॉपर आंसर इन द इंटरव्यू, योर चांसेस ऑफ क्रैकिंग द इंटरव्यू आल्सो इंक्रीज. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. Yes. सर हाँ जी, बोलिए. एक क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. जो पैकेज होता है, तो पैकेज अगर मैं एक ही क्लास बना रही हूँ तो फिर पैकेज की जरूरत नहीं होती होगी. मतलब पैकेज तो अगर मल्टीपल क्लासेस बन रहे हैं. हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट. व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ सिंगल, ना, मतलब इफ अगर एक ही क्लास बनाना है तो सिर्फ जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर एक क्लास बना लेंगे. अगर मल्टीपल क्लास जिनके अंदर कुछ हमको कॉल वगैरह करना है या एक दूसरे से रिलेशन है, तभी पैकेज का यूज है ना. अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ पैकेज. एग्जैक्टली, क्लैपिंग फॉर यू. बिल्कुल सही बात है. अगर देखो, यू कैन टेक द एग्जांपल. अब हम सोसाइटी में अलग अलग घर क्यों बनाते हैं? बिकॉज मल्टीपल पर्सन वांट टू लिव इन द सेम कैंपस. यस और नो? और वरना क्या है, देखो जैसे अंबानी का घर है, उसका घर भी इतना ही बड़ा होता है जितनी हमारी सोसाइटी होती है, उससे भी बड़ा होता है. बट ही डोंट क्रिएट सो मेनी सेगमेंट्स देयर. क्यों? उसको अकेले उसी को रहना है. यस और नो? तो पैकेज, हम वी ट्राई टू क्रिएट द पैकेज टू मेक अ सेग्रीगेशन, टू मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन. Getting my point? Yes. लेकिन ऐसा आपके रियल लाइफ में बताऊं, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, कभी एक जावा फाइल से प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है. तो ऐसा बहुत कम होता है कि आप पूरे प्रोजेक्ट में एक ही जावा फाइल बनाओ.
कम से कम 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, और 2 को 3 भी नहीं होता, एटलीस्ट मैं बताऊं इन एनी जावा प्रोजेक्ट यू विल सी एटलीस्ट 10 to 15 क्लासेस तो होंगी। सर Okay. और एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पैकेजेस भी हो सकते हैं। I have created, you can see this is the package. Main Yes. is one package. So the purpose of package, so that take the example, you have 20 or 30 classes, you want to make a distribution. जैसे मैंने लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया ना कि हिंदी की बुक एक साथ रख दो, इंग्लिश की बुक एक साथ रख दो। Getting my point? तो सर अगर हमें हिंदी की बुक में इंग्लिश की बुक का पैकेज मतलब 1 और 3 को हमें कॉल करना है, तो वो इंपोर्ट जो यूज कर रहे थे आप, इंपोर्ट 1, तो उससे फिर हम एक पैकेज से दूसरे पैकेज के क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। Exactly. It means you are saying that you are residing in one package in one class. You are trying to call the class of any other package. So you are not, class is still there, but you are calling that class in your own class, and that's why you use the concept of import. ठीक है? क्लास वही पड़ी स्ट्रक्चर, क्योंकि क्लास का जो पैकेज का जो मतलब होता है, द पर्पस ऑफ पैकेज, द मेन पर्पस इज दैट सो दैट यू कैन logically distribute it. That is one aspect. Second is that when you distribute in different packages, you make a restriction, है ना, जो आपके access specifier उनके restriction भी और कैसे काम करते हैं, it is also depend on your different packages. तो आपका logical distribution is one aspect, and you can say access specifying, that is another aspect. Getting my point? Yes. Yeah. Any other question? No. So again, I'm saying because I have a time limit, so that's why I cannot pick these topics over and overriding. Otherwise, these topics are very, very related to it. So next class, I will request you please revise, come with your questions, and then we will complete these topics. ठीक है? तो नोट्स मिल सकते हैं क्या? Notes नहीं दूंगा मैं. Who is asking for the notes? Michelle. She has, why you need notes? I'm not teaching well. No, just asking sir, after this call No. class खत्म हो उसके बाद हाँ बिल्कुल नोट्स रिवीजन दूंगा के लिए। मैं, बिल्कुल आपको नोट्स दूंगा। नोट्स आपको कैसे दूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द नोट्स। नोट्स मैं आपको दूंगा, चाहिए तो नोट्स में कैसे दूंगा मैं बताऊंगा। नोट्स में आपको दूंगा, आई विल जस्ट कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट। मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसे मैं कॉपी करता हूँ, उसमें लिख देता हूँ। तो उसमें क्या लिखा होगा मैं बताता हूँ। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा पर्पस क्या होता है, अगर मैंने आपको आज डॉक्यूमेंट दिया, ट्रस्ट मी, आप में से 99% लोग कभी इंटरनेट पे झांकने नहीं जाओगे। You will never go to the internet to find that is there any other definition of a class. Trust me. Yes or no? और आप कभी नहीं जाओगे तो बताएं, मेरी लाइफ तो my life will be easy, लेकिन आपकी लाइफ आगे के लिए परेशानी हो जाएगी। क्यों? Sometimes what happen, I will tell you very, very practical thing that is recorded, and when I will upload in the YouTube, everybody will listen it. ठीक है, but practical thing बताता हूँ आपको। When you will try to write a program, एक प्रोग्राम को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? 4। Are you agree on this? You can write a program in 4 different ways. Yes or no? सबका लॉजिक अलग अलग हो सकता है to achieve the same thing. Yes or no? Yes, sir. आपको पता है, I have faced this problem in my real life when I go to a particular interview, and at that time a manager was taking the interview. और जब मैंने इंटरव्यू दिया, they asked me a program, I written that program on the paper, and he, because the program at that time, I don't know, that was a negative point, but manager was not technical, so he just opened his mobile under the desk and he was trying to match the program. अब बताओ, it was my luck कि वो प्रोग्राम मैच कर जाए कि जो उसको मिल रहा है और वो मैंने लिखा है। Yes or no? है ना, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए क्या है, आपने पेपर में जो लिखा उसके इंटरनेट से नहीं मैच किया, अरे आपने तो लॉजिक ही गलत लिखा है। Yes or no? Yes. And trust me, because at that time my experience was good, so मैंने feel किया, just looking at the face, that she is expecting that this is not the right program. Then I tell her that I can write this program in 3 another ways. So I write another program in other ways. Now there was a smile on the face of the person. Are you getting my point? तो क्या होता है कि अगर मैं आपको एक प्रोग्राम बना के देता कि ये 2 नंबर के एडिशन का होगा, आप जिंदगी में वही 2 नंबर के एडिशन का वही एक तरीका सीख पाओगे। Yes or no? Getting my point? Yes, yes. तो डॉक्यूमेंट आपको मैं तब दूंगा जब आप एक्सप्लोर कर चुके होंगे। Yes, जब आप एक्सप्लोर कर चुके, जब आप मुझे बताओगे। ट्रस्ट मी, मैं क्लास की डेफिनेशन आपको अभी बताता हूँ, क्लास की डेफिनेशन में क्या क्या होना चाहिए। ओके, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, दिस इज वन डेफिनेशन। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास इज आल्सो नोन एज ए कस्टम डेटा टाइप। आपने कहीं नहीं सुना होगा, जस्ट गो एंड फाइंड द इंटरनेट दैट क्लास इज अ कस्टम डेटा टाइप। When you try to find out this thing that class is a custom data type, try to go and explore it, and you will find very, very good things.
आप खुद एक्सप्लोर करोगे। तो ऐसे क्या होगा, जब आपका अभी तो नाउ इट इज गुड फॉर स्टार्टिंग द ऑटोमेशन, बट माय पर्पस दैट you should have the capability to learn the Java as well as you have the capability to explore the Java. Getting my point? Sure. आप अगर जावा को एक्सप्लोर करने की आदत तभी से डालोगे तो द गुड थिंग इज दैट यू विल कम विद सम गुड। मैं बार बार आपको क्यों करता हूँ, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? अगर मैं आपको मोटिवेट ना करूँ, आप कम क्वेश्चन पूछोगे, मेरा कोर्स 5 की जगह 4 महीने में खत्म हो जाएगा। यस और नो? मैं आपको व्हाई ट्राई टू मोटिवेट यू, जस्ट गो एंड फाइंड आउट। यू कैन गो एंड फाइंड आउट। प्रदीप आपने बताया, हो सकता है आपने गलत बताया हो, आपने बताया प्रदीप अगर इसको ऐसा कर दें। So I am trying to give you opportunity to try to explore and just make a debate with me. Maybe sometime I can learn something from you also. Getting my point? So if I will give a particular book, मैंने आपको एक बुक दे दी, आप कभी नहीं सीख पाओगे। Getting my point? Yes, yes. But अगर आप लर्न करना चाहते हो तो मैंने इसका एक और वे बताया था। You can do one thing. Just put a question. I will write a question today. What is class? Everybody will give a definition. So you will try to give a definition that is totally different from one another person. मतलब different का मतलब ये नहीं कि आप क्लास की जगह ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताओ। Try to explain the class in your own words and try to find out कि आपने इसको सही से explain किया कि नहीं। Getting my point? Sure. Okay, so I will put this type of questions from today, that what is class and object. Everybody have to give the answer on that. Maybe somebody will give the wrong answer, somebody will not explain in a proper way, but you will learn that what type of definitions can come and what point you should use and what point you should not use. Is it okay? Yes, yes, totally different. Agree. Thank you. Agreed. Okay, but if you want, I will share the document. That is not a big deal. Just asking because things. I was just asking because yeah, as you said, next class read करके आया overhead. So that's why I was asking. Okay, so आप इस वीडियो को देखो, कोई सबसे पहले देखो, आपको कोई डाउट हो, आई एम विद यू। मैंने कभी नहीं बोला दिस इज आवर 8th क्लास। आप मेरी जब 2 महीने 2.5 महीने बाद दोगे, यू कैन पिक एनी रिकॉर्डिंग दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। मैं उसमें भी यही बोलता हूँ, माय एटीट्यूड विल बी सेम। यू हैव टू मेंटेन योर एटीट्यूड, आप भी मुझे वैसे ही पूछो, है ना। अब आप पूछो 8 क्लास के बाद अगर कोई बंदा रिवाइज नहीं करेगा, मुझसे पूछता है दी आप बताओ कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए, आप मुझे बताओ। ठीक है, तो लेकिन अगर मुझे कोई स्टैटिक का घुमा के ऐसा क्वेश्चन पूछता है सर स्टैटिक को ऐसे यूज करें, आई विल बी हैप्पी। अरे यार स्टैटिक को तो मैंने बताया था लेकिन उसने सोचा मैं ऐसे यूज करूं, दैट इज रियली अ गुड थिंग। लेकिन कोई मुझे सर स्टैटिक एक बार बता दो, सो आई विल से ये तो हो गया कि सर एक काम करते हैं, 10th क्लास में सर बताते हैं कि सर मुझे बताओ एबीसीडी कैसे सीखते हैं, यस और नो। So that's why I'm saying that try to explore. आप क्वेश्चन पूछो, मैं क्वेश्चन के लिए कभी मना नहीं करता। I always motivate that ask the question, but before that you should do your homework. मैंने जो पढ़ा है उसको करो, उस पे एक्सप्लोर करो। Yes or no? Yes, yes. Agree? अगर कोई एग्री नहीं है तो मैं आपकी तरफ भी पढ़ाऊंगा। Is it okay? Yes, yes. Thank you. Have a nice day. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you. I can